Welcome to this class on Delish Gourmet starters from around the world. We'll be doing starters which can be served as an evening snack or as an appetizer. Just remember, the size of the appetizer needs to be smaller as compared to the snacks if you're serving to your family in the evening. So they go very well for high tea as well as for your get-togethers. Now the first thing is a foxtail millet glory with lettuce cups and pomegranate picante sauce. Now 2023 is the millet year, and so let's do something with the millets. Though these balls can be made with quinoa or leftover rice also. Now for the foxtail millets, which is Kangani in Hindi, you know, जब हम millets की बात करते हैं तो we only think of ज्वार, बाजरा, then but kudo and foxtail millet या Kangani are the new millets which are very healthy, rich in calcium, magnesium, protein, and so do include them in your meals or in your snacks, whatever way you can. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे फॉक्सटेल मिलेट्स के बॉल्स. तो उसके लिए ये मेरे पास फॉक्सटेल मिलेट्स हैं और इन्हें आपने बॉईल करना है. जब भी आप मिलेट्स बॉईल करो या राइस बॉईल करो या किनवा बॉईल करो, इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड अ लिटिल लेमन जूस, क्योंकि जब आप लेमन जूस डालते हो तो उसमें थोड़ी फ्लेवरिंग चली जाती है. तो खुले पानी में आप पहले इन्हें थोड़ा सोक कर सकते हो. अगर टाइम है तो सोक कर लो, अगर टाइम नहीं है तो अच्छी तरह से वॉश करके खुले पानी में आप थोड़ा सा नमक और नींबू का रस डालकर इन्हें उबाल लो. और उबालने के बाद आप देख लो कि ये तैयार हो गए हैं. इन द सेंस यू कैन पुट देम इन योर माउथ एंड फील कि वो पक गया है. तो ये मेरे पास बॉइल्ड मिलेट्स या कंगनी पड़ा है. इसकी जगह आप कूडो भी ले सकते हो या आप कोई किनवा या बॉइल्ड राइस भी ले सकते हो. तो और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर. वी हैव सम बॉइल्ड कॉर्न विद अस एंड बॉल्स बनाने हैं. जब भी कोई बॉल्स बनाओ और कॉर्न डालो तो अगर साबुत डालोगे तो वो बाहर निकलने लगते हैं. सो इट्स अ गुड आइडिया टू चॉप द बॉइल्ड कॉर्न्स. और बॉईल कैसे करना है, फ्रोजन कॉर्न को बस गर्म पानी में, उबलते पानी में डाल के निकाल लीजिए. वी हैव सम रेड पेपर चॉप्ड, मेक इट फाइन एंड थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लो ताकि पानी ना हो उसके अंदर. थोड़ी सी हमारे पास मोज़रेला चीज़ डाइस्ड है या ग्रेटेड है और थोड़ी सी चेडर चीज़ है. अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना बॉइल्ड जो हमारे मिलेट्स हैं, और मिलेट्स के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्न, और नमक तो जाएगा ही. और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नीता मेहता ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नीता मेहता रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में नीता मेहता ओरेगनो सीजनिंग. अब इसे अच्छी तरह मिलाकर और आप इसे मिक्स कर लीजिए. अब इसमें हम नमक नहीं डालेंगे. क्यों? क्योंकि हमने जो मिलेट्स है उसे भी नमक वाले पानी में उबाला है, चीज़ में भी नमक है, तो ज़्यादा नहीं. और इसे ऐसे करके बस मिक्स करके लेमन साइज्ड आपने इसके बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी पैनको लगना है, एक बैटर लगना है, तो वो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं. तो छोटे नींबू की जैसे देसी नींबू होता है, ऐसे आपने इसके गोले बनाने हैं. गोले बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लो. अगर नमक की ज़रूरत पड़े तो नमक थोड़ा सा डाल दो, बहुत ज़्यादा नहीं. अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गई, इसके अंदर एक चुटकी इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर भी डाल रहे हैं ताकि वो बहुत डेंस ना लगे. नाउ अब आपने बॉल्स आपके बन गए, मिक्सचर बन गया बॉल्स का. अब एक हमने बैटर बनाना है. बैटर में क्या क्या है हमारे, कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, और अगेन थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी मिला सकते हैं एंड सॉल्ट. और इसे हम
पानी के साथ थोड़ा सा घोल बना लेंगे, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। लम्प्स ना हो। ये देखिए कैसा है, इट इज़ लाइटली कोटिंग योर स्पून। थोड़ा सा आपके चम्मच को कोट करेगा तो फिर ये आपके बॉल्स को भी कोट करेगा। तो हमारा ये भी बन गया बैटर। और अब हम बनाएंगे इसके लिए कोटिंग। पैनको क्रम्स आर वेरी नाइस दीज डेज, दे आर ईजिली अवेलेबल, बट इफ़ यू डोंट हैव यू कैन यूज़ द रेगुलर क्रम्स। थोड़ा सा इसमें फ्रेश पार्सले मैंने डाला है, थोड़ा सा ओरेगनो सीजनिंग है और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारे बॉल्स बना दो, 2-3 बनाए, हाँ ठीक है। नाउ ये रहा हमारा बॉल, छोटे छोटे। जो पैनको है इसको आपने एक प्लेट में या शैलो बोल में डाल के रखो। इसको हमने इसमें डिप करना है, पैनको में रखना है। अब इसको पैनको इसके ऊपर जब डालोगे तो साफ हाथ से ऐसे करके इसको अच्छी तरह से, ये आपका तैयार है एक बॉल। इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, इसमें डाला, गीला वाला हाथ अलग, सूखा वाला हाथ अलग, इसमें डाला, सूखे वाले हाथ से इसे ऊपर किया, पैनको को डाल दिया ऊपर। जस्ट टॉस इट इन नाइसली और ये आपके बॉल्स तैयार हैं। यू कैन मेक दीज बॉल्स एंड कीप देम फॉर 2 to 3 days इन द फ्रिज। कोई टाइम इसको आराम से आप इसको रख सकते हो 2-3 दिन तक। अब ये बॉल्स को आप फ्राई भी कर सकते हो, पर अगर फैमिली के लिए बना रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप इन्हें एयर फ्राई कर लो। तो एयर फ्राई कैसे करते हैं, जैसे ये मेरे पास बॉल्स बने हुए हैं, और वैसे भी एकदम जो ताज़े बने उन्हें एकदम फ्राई मत करो, क्योंकि ब्रेड्स को चिपकने का थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। अब अगर ये एयर फ्राई में डालने हैं तब ये करना है। तो आपने इसको ब्रश करना है ऑयल से और एयर फ्रायर दे दो, और इसे आपने ऐसे एयर फ्रायर में रख दीजिए ऑयल से ब्रश करके। अब ये हम एयर फ्रायर में एयर फ्राई करेंगे। अब अगर आपने फ्राई करने हैं तो ऑयल को गरम कर लीजिए एंड लेट्स सी इफ द ऑयल इज़ रेडी। इफ़ योर ऑयल में अगर आपने थोड़ा सा क्रम्ब डाला या कुछ भी डाला और वो ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब आपका ऑयल रेडी है। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत, ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट 1 इंच ऑयल इज़ गुड इनफ। बहुत ज़्यादा तेल में मत फ्राई करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं तो तेल आपका स्मोकिंग पॉइंट पे जाता है। तो कम क्वांटिटी में आप फ्राई करें। एक टिप और आपके लिए कि अगर जब आप ये फ्राई कर रहे हैं तो फ्राइड ऑयल जो बचा हुआ है उसे घर के लिए कैसे यूज़ करें। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये तेल बचा हुआ है इसे छान कर अपने ऑयल जिसमें रखते ऑयल कंटेनर में डाला और थोड़ा सा ऊपर ताज़ा ऑयल मिला दीजिए। जैसे अगर इतना तेल आपका डब्बे में आया है तो इतना ही और ताज़ा तेल उसमें मिला दीजिए और फिर उसे अपनी रोज़ की सब्ज़ी, दाल, जिसमें भी डालना है आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ये फ्राई कर लेते हैं। अब इसे सर्व कैसे करना है, अगर पार्टी स्नैक है तो थोड़े स्टाइल में सर्व करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये एयर फ्राइड भी पड़े हैं और ये फ्राइड भी अभी हमने निकाले हैं, तो दोनों यूज़ कर सकते हो। ये एयर फ्राई वाले हैं, सो यू कैन यूज़ एनी। अच्छा, अब ये लेटिस को मैंने पानी में डुबो के रखा हुआ है और इसको मैं ऐसे कप से काट लूँगी। आइसबर्ग लेटिस है। दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन एंड इट ऑल्सो एड्स टू द टेस्ट ऑल्सो।
और ये जो लेटस बचती है इसको आप अपने रैप्स में या अपने सैलेड में किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने पानी में रखा हुआ है। देखिए, लेटस को पहले आप पानी में रखेंगे और उसके बाद इसको ट्रिम करेंगे। Now you can serve them in individual plates or you can serve them, you know, together also. So let's do it individual plates में today. This is a Picante sauce. तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस जैसे कोई भी ब्रांड की आपके पास हो उसमें आप थोड़ी सी क्रीम मिलाकर ऐसा कलर बना लीजिए और इसको हम रखेंगे। थोड़ी सी पिकांते सॉस को अपने लेटस कप्स पे लगाएंगे सेंटर में। ये हट गया। इसके ऊपर रखेंगे एक बॉल और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डाल देंगे और इसके ऊपर एक पार्सले जो हमने पानी में भिगो के रखी है लेटस कप्स के साथ ही वो लगा देंगे। और हमने कहा था पोमोग्रेनेट पिकांते, तो थोड़ी सी आप अपनी पिकांते सॉस में भी पोमोग्रेनेट मिला सकते हो और थोड़ी सी ऐसे ऊपर भी डाल सकते हो। सो नाउ दिस इज़ डन एंड इफ़ यू लाइक थोड़ा सा चिपोटले आप इसमें डाल सकते हो। और अगर आप चाहो बिफोर प्लेसिंग दिस you can just do this on the platter. So you can fill your mayonnaise here in this. So this is done. Next we'll be doing कोलीवाड़ा टोस्टाडास। एंड कोलीवाड़ा टोस्टाडास में क्या है कि आपने टॉर्टियाज लेने हैं। आप होममेड टॉर्टियाज भी यूज़ कर सकते हो, आपको रेसिपी दी गई है। एंड बाज़ार के भी टॉर्टियाज आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए ये आपने टॉर्टिया है मेरे पास और ये पैकेट खुला हुआ है तो मैंने इसे जिपलॉक बैग में डाला हुआ है। जब आप जिपलॉक बैग में डालें तो जो खुली वाली तरफ है उसे नीचे रखें ताकि आपके टॉर्टिया सूखे नहीं। ओके, नाउ टॉर्टियाज को आप एक कटर से काट लीजिए। अपने पीसेस कर लीजिए। और कोलीवाड़ा क्या होता है? कोलीवाड़ा इज़ एनी डिश विच इज़ स्पाइसी एंड क्रिस्प। सो कायदे से तो ये फ्राइड होता है पर आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं। आजकल लोग फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस फॉर द स्पाइसी। आई एम यूजिंग दिस वीबा की चिली पेस्ट। सो आई हैव दिस चिली पेस्ट विद मी एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ इसके ऊपर ये चिली पेस्ट लगा रही हूँ। एज स्पाइसी एज यू लाइक। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लो, छोटे बच्चे हैं तो कम लगा लो। इफ़ इट्स अ किटी पार्टी यू कैन मेक इट नाइस एंड स्पाइसी। ओके, नाउ इसको किस पे रखना है? हमने एक ट्रे को ग्रीस कर लो ऑयल से और उसके बाद इसे हम अवन में 10 मिनट, अब 10 लगे या 5 लगे या 8 लगे, आप
आपका अवन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसे मैं अब अवन में रखने जा रही हूँ। और मैंने एक बना के रखे हुए हैं, तो आपको वो दिखा देती हूँ। ऐसे आप पहले भी बनाकर रख सकते हो। ओके, कितने मिनट रखना है? ये नीचे से थोड़े गोल्डन एंड क्रिस्प हो जाएंगे। क्रिस्प एक्चुअली बाहर निकाल के ठंडे होने के बाद होते हैं। आप देख लीजिए नीचे से थोड़ा सा इसका रंग अच्छा गोल्डन हो जाए। सो वी हैव आवर टोस्टाडास का नीचे का बेस रेडी, सो वील यूज़ दैट। अब कोलीवाड़ा कॉलीफ्लावर बनाएंगे हम। कोलीवाड़ा कॉलीफ्लावर के लिए हम लेंगे गोभी, और गोभी को हमने काटना कैसे है ये दिखा देते हैं आपको, और क्या क्या पड़ता है। कोलीवाड़ा गोभी के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए छुरी, सबसे पहले तो इसकी ये डंडी निकल जाएगी, और फिर इसके आप ऐसे टुकड़े कर लीजिए, फ्लोरेट्स निकाल दीजिए हाथ से। फ्लोरेट्स पहले बड़े बड़े फ्लोरेट्स करके, और इसके फिर हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, जल्दी से हो जाते हैं। जो थोड़ा सा बड़ा रह गया उसे 2 कर दीजिए, ये बड़े हैं इसे 2 या 3 कर दीजिए, पर छोटे छोटे आपने लेने हैं। तो पहले फ्लोरेट्स में ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद उसे काट लीजिए। फ्लोरेट्स को डंडी नहीं चाहिए हमें, इसकी स्टेम्स नहीं चाहिए। सो एंड इसको फिर धो लेना, ये धुली हुई है। ओके, अब इसमें हमने मिलाना है थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैं यूज़ करूँगी नीता मेहता हींग, तो थोड़ी सी हींग पाउडर। हींग गिव्स अ नाइस फ्लेवर। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा नीता मेहता चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक। और कश्मीरी मिर्च हमारी बहुत अच्छी है, इट गिव्स अ नाइस कलर। सो डू ट्राई आवर प्रोडक्ट्स एट Amazon, nitamehta.com, cookflakes.in, सब जगह आपको ये प्रोडक्ट्स हमारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर। ओके, अब इसे अच्छी तरह से हम पहले मिलाएंगे। इसमें हमें बेसन भी डालना है, पर बेसन डालने से पहले इसे अच्छी तरह से मिला लो। नींबू का रस और जो अदरक लहसुन की पेस्ट है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जानी चाहिए, और मसाले भी, जो चाट मसाला है, लाल मिर्च है, कश्मीरी और नमक है, वो भी सब मिल जाएगा। अब इसमें हमने नेक्स्ट डालना है बेसन, और बेसन डालना कितना है ये डिपेंड करेगा आपकी गोभी की क्वांटिटी पे। एक साथ सारा मत डालो, थोड़ा सा डालो, और जस्ट गिव इट अ टॉस। अगर मिलाना भी है चम्मच से तो बहुत ही हल्के हाथों से मिलाओ, ताकि ये मिक्स हो जाए। ऐसे करके अच्छी तरह मिलाओ। मैं और बेसन डाल रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ नीता मेहता बेसन। We've come out, we've just launched this besan, and people are very happy with it, making their paneer pakoras, palak pakoras, bread pakoras, curry. So please do try our besan also. So more besan, slightly to coat. You can just give it a toss like this. It's better if you just toss it. और अगर लगता है तो हल्का से हाथ से मिलाओ। तेल हमारा गरम है, और आप गरम तेल में इसे डालेंगे, पर बहुत गरम नहीं। और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेस्ट योर सॉल्ट, इट्स ऑलवेज गुड टू टेस्ट। अच्छा, एक गोभी डाल के देख लेते हैं, हो गई है। अच्छा, अगर हमें ये फ्राई नहीं करनी, बहुत सारे लोग हमारे बीच होंगे जो बोलेंगे फ्राई नहीं करनी हमने। अगर फ्राई नहीं करनी है, ये देखो ध्यान से, ये रेसिपी में दिखा नहीं हुआ। 1 टेबलस्पून ऑयल मिला दो इसके अंदर, और उसको ऐसे करने के बाद अपनी बेकिंग ट्रे में डालकर उसे फ्राई कर लो, उसे ग्रिल कर लो इन योर बेकिंग ट्रे।
ट्रे को भी थोड़ी सी ग्रीस कर दो और इसी में थोड़ा सा, और एक्चुअली आई वुड सजेस्ट बेसन डालने से पहले तेल डाल दो और फिर उसे आप बेसन से कोट कर दो, वो बेटर रहता है। तो हम इसे कर सकते हैं और ये मैंने करके रखी हुई है। You know, you can either fry it like this or you can grill it. This I've grilled in the oven or baked in the oven. Now when you want to bake in the oven, when you put your lemon juice and your ginger garlic paste, add a tablespoon of oil. Thoda, you need a little oil even if you bake. So add a tablespoon of oil to the 2 cups of cauliflower and mix your spices and then add Nita Mehta besan as needed to coat, and then put it on a greased tray the way I did it for my tortillas. And I would say it took me, this quantity took me about 20 minutes at 180 degrees, and you can always check it, it will depend on the size of the florets also. So this was baked for 20 minutes. So you could bake it or fry it, your wish. For a big gathering it always becomes easier to fry. For a small family gathering you can go in for baking in the oven also. So we can put this only in the oven. Okay. Now see what are the other things that we need now. We need a cauliflower mint mayonnaise. Now how do you cauliflower mayonnaise and a mint mayonnaise also. Now cauliflower mayonnaise के लिए मैंने क्या किया, ये जो हमारी चिली गार्लिक पेस्ट थी, यही वाली cauliflower is spicy, so mayonnaise में ये मिला दी and I got this, see the color and the spiciness how you like it. So हमारे पास ये तैयार है। उसके बाद मेरे पास एक हरी चटनी मैंने बनाई हुई थी, उसको मैंने mayonnaise में मिला दी, और you could mix the हरी चटनी with a little hung yogurt. If you don't want to use mayonnaise, you can use hung yogurt, you can use cream. There are so many things which you can use, whatever is available and whatever suits your family. Okay. Now besides that, what we need is some onions. Now this is the cauliflower that has just been fried. I have some grilled one also. I'll just mix both of them together. I have some juliennes of onions and I have written spicy juliennes. So what do we add for the spicy juliennes? We have a nice cauliflower mayonnaise with us. So we'll add some of this cauliflower mayonnaise. I'll mix it up in a bowl. Needs to be mixed properly. The juliennes, onion juliennes or slices, whatever you find comfortable, just mix with the cauliflower to bind both of them together with some cauliflower mayonnaise, which is nothing but mayonnaise mixed with red chili paste, as spicy as you like. Okay, so we have this is also done. Now how do we go about doing it? I've written some green onions. If you don't get green onions, you want to add some green color to your snack, you can just use some juliennes of some green pepper. So I'll just use these for the garnishing. Okay. Now all you have to do is take a tostada, this side up, put some green. Okay, these have been baked just now, they are nice and crisp, नीचे से हो गए, these are freshly baked, but let them cool before you use them. Okay, we have some already with us, so we'll use these. Just put some the mint one नीचे, a little thickly, so that the taste comes. You can just mix your hari chutney with some mayonnaise. I would say the other way, a little mayonnaise with lots of hari chutney,
And for the koli vada red one, lots of mayonnaise or hung yogurt with a little red chili paste. We put some koli vada spicy cauliflower with onions and a little red koli vada, spicy chili koli vada mayonnaise on it. Okay, now we dot this with a little green chutney, if you like. And let's do a little plating with it. All you have to do, put a little heap, make it a little round and tilt your spoon and do this. Let's do a little green on the other side. That's good enough. And here goes our tostadas. What do you garnish this with? With some black sesame. Remember to toast your black sesame. I always toast them and keep them. And some green onion or anything green would do. Just put one on top. So these are our koli vada tostadas with koli vada cauliflower. Okay, so now we are done with this also. Let me show the close up. Fine. Now let's do the third recipe. The third recipe is a beet and jalapeno risole with burnt chili yogurt. We'll do the beet one later. For this we need a boiled beetroot. And how do you boil your beetroot? Just take a beetroot and boil it with a little water in a pressure cooker to give just one whistle, and you cut it and chop it. So this is what it is. Soya granules or soya nuggets. I've used Nita Mehta soya chunks. They make your food healthy, they make it delicious, and they add great taste and nutrition to your food. So इसको क्या करना है, इसको boil करना है और फिर पानी में boil करके नमक वाले पानी में just leave it in water for some time. Now you have to grind all this. Now how do you grind all this? You have to just put these soaked soya chunks, your boiled beet, and some ginger, garlic and green chili. They're all together here, and no water. When you grind it, if you need water, just keep adding a teaspoon or a tablespoon at a time, because you don't want too much water. If you add extra water, it takes much longer on the fire. So we grind this to a paste. I have a paste ready with me, so we will just forget about this and we can proceed further. Yes, see, this is how the paste looks like. So what all is this? A boiled beetroot, some soya chunks which have been boiled and soaked, ginger, garlic, green chili, with just a wee bit of water if really needed. If you grind small batches, you don't need the water. Alright, this is, you should grind it to a smooth paste. There would be some fiber, but still as smooth as you can. So that is why it's a good idea to chop the ginger, garlic and green chili finely. Alright, we do it in butter. So we add the butter first, and in this
butter, we are going to add rosemary and some Nita Mehta red chili flakes. Rosemary gives a nice flavor to this. So when you are melting the butter, see that you don't burn the butter. Once the butter melts, here goes in red chili flakes and rosemary. Now when the rosemary gets fragrant, we want to add some sesame seeds or white till. So let it get fragrant. I'll wait for a while, and now I can smell it, and I'm adding some sesame seeds to it. Let the sesame seeds turn golden. Once they turn golden, I'm adding this paste. The paste, what is this paste? Beetroot, ginger garlic and soya chunks. Now bhuno this for 2-3 minutes. Now when you are bhunoing this, all you need to make a burnt chili yogurt drizzle. Now how do you do that? For a burnt chili yogurt drizzle, I've done that. You just make a chutney, but burn your chilies. If you don't like them hot, you can reseed them. But the chilies are not so hot these days, so I've not reseeded. So the way you bhuno your bengan on the naked flame, just bhuno your green chilies like this. Take half a cup of mint, half a cup of coriander, these green chilies, a little lemon juice and a little Nita Mehta honey. We've come out with honey also. So do try our honey. You get them in different packs, smaller packs. And in case you missed any of my videos, you can always purchase them on cookflix.in. When you open cookflix.in, go to online classes, look up, there are different categories like Chinese and Japanese and the Pan-Asian ones. Then we have an Italian and continental category, similarly snacks and so on and so forth. And open that and you see a number of videos, and in that you can see the teaser video, you can see the contents and choose what you want to, and you can always pay and buy those videos. Another thing, if you have any queries, at the end of this thing we have a live question answer session. You can talk to me, and also if you have any questions while you're doing your work, you can always join the WhatsApp group and ask your questions if you do have some. Okay, so this is the yogurt dip that I have made. So I made a mint paste with a little yogurt. When you are doing the mint paste, if you read the recipe carefully, I have not added all the 4 tablespoons of the hung yogurt while I am grinding, because that is going to make it very thin. So you grind it with just 2 tablespoons of hung yogurt, just enough to make it smooth, and then you add the remaining yogurt once you've taken it out of the mixer. So I have this yogurt ready with me. Now after this is done, we take this out in this is done for 2-3 minutes, and now we need to add a few more ingredients to it. So we'll be doing that. Okay, now what else do we add? A few more things I've called beetroot and jalapeno risol. So this is jalapenos. You get these pickled jalapenos. I've chopped these and I'm adding the chopped jalapenos. A little bit of paneer I'm adding. Just grate a little paneer and add it. Okay, and a little corn flour to bind, and we need to just mix everything. Milao isko. Now I've made some and kept, which I'll just saute for you or fry for you. A little bit of oil, about 2 to 3 tablespoons. Now remember not to do it on very high heat, because high heat will discolor. You can make these like this and freeze them also if you like. Now let me just taste it and see. See, the salt is less, so I need to add some salt to it.
Always taste. It's a good idea to taste. The rosemary is tasting nice in it. The till or the sesame seed is giving a nice crunchy flavor. Now at this moment the mixture is so hot that it can't be fried. It needs to cool down and then only it can be fried, and that's why I made some and kept. It's so hot I can't even touch it comfortably. Let me just see. Now it's alright, the salt. Okay. Now make these small balls. Flatten them. Just put some more sesame seeds on top and press. That's how you do. So we don't need these because we already have. Now this is hot enough and we'll fry them. Now when you're making them, just remember to roll them and then stick the sesame seeds on top to get a nice edge. Let's see if it's hot enough. I can just put some sesame seeds and see. Still needs to be a little hotter. Now we need some mint dust, as I said. Now what is mint dust? Mint dust is nothing but dry mint powdered to a dusty texture. So all you have to do is dry. You get dry mint, but if you don't get it, you can always do it at home. Just wash your mint, put it on a paper towel for about 2 days. It dries by itself. If you're in a rush, you can just put it on a microproof plate or on a paper towel again in the microwave and dry it for about 2-3 minutes. Give it a toss and again rotate the microwave for another minute till it becomes dry and leave it outside. It becomes crisp and then you can just use it. You can use it in many things. Now this is done. Just a little bit of oil, 2 to 3 tablespoons, not too much. Don't make the temperature too much because it will discolor your beet rissoles. Okay. We can serve this beet rissoles in this. We have these green chilies. You can just put them around. This is your burnt chili yogurt dip. Now we just turn them around. So now, and we'll sprinkle the mint dust on it. Once they turn a little golden on top, not golden, I would say a little brownish patches come on top, you need to just take them out because everything is cooked. The beet mixture has been cooked and nothing is really uncooked in it, just a little corn flour which needs to be cooked. Okay, we are done with it now. I have some yogurt drizzle here. In this, I'll drizzle it. In a piping bag, I have this. You can always place them one on top of the other if you like. Just wondering what to do. That's enough. Just drizzle a little on your plate if you like, and the mint dust. Don't put your garnishing everywhere. Like, see, I've left this plate, this part clean. So there should be some naked place on your platter too. So we are done with these beetroot rissoles with burnt chili, yogurt, drizzle and mint dust.
Now next is polenta crusted roasted tomato sauces. Now what is polenta? Polenta is nothing but makki ka atta type. So I have these burger buns, and what I'm going to do is just draw a round like this and pull this to make it a little hollow. And now just brush this with oil. Everywhere, even the bottom. And sprinkle some makki ka atta on the sides. थोड़ा सा अंदर भी डाल दो, कोई हर्ज नहीं है. Now this is, I'm using it instead of the polenta. What does this do? This gives a nice crisp texture to your sauces. Okay. Now see, there are two ways. You can do this and put them in the air fryer or put them in the oven and grill it directly. Now ये तेल लगा दो नीचे ऊपर. Or you can fill it and then grill it. Either ways, you know, if you like it very crisp, it's a good idea to grill them like this. I've done this. So it was this only which was in the air fryer. It's become like this. Now one I'll do complete and then grill it. Now what do you do? First of all, we have to make a filling. Okay. इसके ऊपर भी I'll sprinkle the polenta, both sides. And now a little oil in this for the roasted tomatoes. How do I roast the tomatoes? I have some sesame seeds. Let the oil get hot and then I'll do the sesame seeds. I have some cheese, I have some olives. Now let me tell you how to do the pesto, the gourmet pesto. Now the gourmet pesto has been made, and how do you do it? You take a cup of basil leaves made in oil, so naturally you need oil for it, and some pumpkin seeds. Just dry roast the pumpkin seeds. So the pumpkin seeds are dry roasted. Garlic, pumpkin seeds, garlic, oil and lemon juice. Grind all together and then add a little cheddar cheese and just give it a quick pulse. Cheese के साथ ज़्यादा नहीं पीसना है. It becomes very greasy. Okay. Now the oil's got hot and I'm going to add some sesame seeds to the oil. And as soon as the sesame seeds turn a little golden, I'm going to add some cherry tomatoes. Now if you don't have cherry tomatoes, you can always use your regular tomatoes. What do you do with the regular tomato? Cut it like this. Cut it into 4. De-seed it and then cut it into pieces like this. So you can even use your tomatoes like this if you want. So you're clear about the gourmet pesto. Why is it gourmet? Because I've used pumpkin seeds which have been toasted. It gives a nice green color and it gives, instead of the walnuts or the pine nuts, it gives a nice green color. Now when you're doing the tomatoes, बहुत ज़्यादा इसको हिलाओ नहीं और थोड़ा सा इसको काला काला कहीं कहीं से पैचेस आने दो. वो अच्छे लगते हैं काले काले पैचेस. It gives that roasted look. Now turn. बस हो गया. Otherwise the sesame seeds will burn. Now how do you use these? We brush them with oil, sprinkle some makki ka atta or polento
I'm going to put a thin layer of cheese in it, grated cheese. I'm using this also, the ones that I've already grilled. After this has been done, we need to add some corn to it. Corns have already been boiled, so ज़्यादा उसको cook नहीं करने की ज़रूरत. Cheese डाल दी नीचे. Now we put a thick layer of pesto, a thin layer of cheese and a thick layer of pesto on it. Just put one spoon like this and then spread it. Okay. And now we put our tomatoes and corn. If your burger buns are very broad, you can cut them into 3 slices also. Just see how and these days some of these burger buns are already coming, slit. So you could just use those 2 pieces. So we have this. Put some olives. And then they go into the air fryer or in the oven. This will take hardly any time in the air fryer, but this will take longer because it's not been done. And you can just put some parsley or something, more pesto if you like. This is not looking nice. Let me just put it in a heap like this and put some. So we are done with our roasted pepper, roasted tomatoes, flying saucers or saucers with pesto gourmet. So this is also done. And if you want to serve it as appetizer, you can choose those, those small soup buns that we get. You can make it on that or on smaller, or you could also do it on a garlic bread slice like a bruschetta. You could do that also. But what I'm trying to tell you is when you add that makki ka atta or the polenta, it gives a very nice crispy feel to the whole thing. Now we do the next Andhra style cottage cheese with sambal glaze and gunpowder coat. Now we need to first of all make a sambal glaze कह रहे हैं हम उसको, tamarind sambal glaze. So I have this tamarind pulp which I have taken out, and this is a ball of tamarind with just a little bit of water because I want a thick pulp. So here's some chopped coriander. I'm adding some tamarind pulp. Now whenever you add tamarind pulp, you need something meetha. So I'm adding some jaggery powder to it, gur powder. I'm adding some sambar masala. I've used Nita Mehta sambar masala, and I'm adding some sambar masala and salt, a little tomato ketchup. And when I say sambal, what is sambal? Sambal is nothing but an Indonesian chili paste. So
So Indonesian chili paste की जगह you can use the sambal or you could use the regular chili paste. So I'm using this chili paste here. Now all this has been mixed. So the khatta, meetha, tikha, spicy, sweet, sour. So this is our tamarind sambal glaze, which is ready. If you like, you can just taste a little to see. Nice. Now what you do is, now you cut your paneer with this crinkle knife. It gives a nice lines to the paneer, and put a slit in your paneer. Just put a slit like this and fill this inside your paneer little bit and keep putting it in this. डाल के जाए सब में भर दो इसको. Okay. Now after this is done, we need to make a plating के लिए a little chili turmeric oil. Now how do you do that? Just a little bit of oil, about 2 tablespoons. Let the oil get a little hot, not very hot, but a little hot. And I'm going to add a little haldi. I'm using Nita Mehta haldi, which is really nice and pure. It gives a nice bright yellow color. Let me see. The oil is still not hot. Okay, now it's hot. I've added the haldi, switched off the pan. See, a nice pretty color. And I can't use it like this. It won't look nice. I need to strain this. So I'm going to just strain this. And my turmeric oil is ready. This is my turmeric oil. Now let's do the paneer. When we are doing the paneer, I just need a little oil. हो गया पनीर सब? इसमें डाल दो बस ठीक है. Now after you've stuffed the paneer, put it in the remaining mixture and mix it up well. For the tamarind sambal glaze to coat the paneer nicely. This is how your paneer looks like. The coriander sticks nicely. And now a little bit of oil in this, not too much. A little red chili, Kashmiri red chili powder. Just swirl it around. Gives a nice color to your cottage cheese. And now we put the paneer here. I have this gunpowder with me. You know what is gunpowder? Gunpowder is nothing but it has some dals and spicy red chilies and dals and some maybe a little wheat flour in it, which gives a nice coat. Okay. Now I'm going to just sprinkle some gunpowder on it. And now इसको पलट दो. Let's do the plating. Brush दे दो मेरे को. We have this haldi turmeric oil, and I'm going to just put this here
See how nice the yellow color looks? The yellow color looks really pretty. Now once the paneer is done, I'm going to take it out and place it here. And if you like, you can add some more gunpowder to it. Just sprinkle some more gunpowder on the platter also, and on the hot paneer. And if you have a green onion with you, or anything green, maybe a coriander, a mint leaf, all dipped in water, greens, or nothing, if you have nothing, a little simla mirch or a green pepper, just to add some color to it. So there we go. We finished with this also. This is the Andhra style because it has the tamarind, sambar powder. So Andhra style cottage cheese with tamarind sambal glaze. So we are done with this. Next we'll do the Piri-Piri burrito bites. Now burrito bites, most of you must be knowing it, but I thought let me just do it because I have a little different kind of a recipe. A little oil goes in. Normally when you add garlic, you always add it in the beginning. I don't like to do that. I like to saute my onions and capsicums first and then add the garlic. So let the pan get a little hot and I'll add these. Onion sliced or julienne, and some green capsicum and some red capsicum. We'll saute this, and once this gets sauteed, then we need to add some garlic and some blanched veggies. Now I have used, you could use broccoli, you could use zucchini, you could use mushrooms. I had carrots and beans lying around in the house, so I've used that. What I'm trying to tell you, whatever vegetables you have, just cut them finely, and the beans have been sliced very finely, and the carrots have also been halved and then sliced. So once the onions and the capsicums, they turn a little soft, you don't need to brown them, they just turn a little soft, add a little garlic, chopped garlic to it. And once the garlic gets fragrant, smell aane lag jaye, then we add the other vegetables of your choice. It could be any vegetable. So I'm adding the carrots and the beans. These are blanched. Now how do you blanch them? See, the unblanched vegetables have gone in first and the blanched vegetables go later. And all you have to do is boil some water with some salt and a pinch of sugar. The sugar keeps the greens more vibrant. So we add our beans and carrots and just give it a boil, and you can always put a little piece in your mouth and see what kind of texture are you looking for. Very soft, crispy, crisp, tender, and take them out and refresh it. It's a good idea to refresh them. Now after that, I'm going to add some paneer. Actually, you know, when I made that paneer, Andhra style paneer, I added that only. When I was trying the recipe of Andhra style paneer, I had some leftover, so I added it to the burritos and they really tasted nice. You could do that, or you could just add this fresh paneer also. And now in this we add some Nita Mehta pizza seasoning or some oregano seasoning. We need a little extra, that will take very long. So just put like this. Okay. Some red chilli flakes.
Actually, instead of oregano seasoning, I just realized we were doing burrito, piri-piri burrito. So let's add piri-piri seasoning. So this is also a very nice piri-piri seasoning. This goes very well with French fries or in your sandwiches. You can add any seasoning of your choice, but I prefer the piri-piri to the oregano in this. So do anything. Whatever comes in your hand is good enough. Okay. Now we have these tortillas with us. If you've taken them out of the fridge, sometimes if they are very cold, it becomes difficult to roll them. So it's a good idea to just warm them slightly before you roll them. But these have been lying around outside, so I don't need to warm them. They'll roll. Always never put them like this. Put them the wrong way. The open edge towards the lower side. They don't dry up. They stay better. Okay. Now the vegetables have been done. We didn't add salt. We need to add some salt. That is a must. And some pepper also. Black pepper. Now what am I doing? Just some ready-made mayo. Mix it up. I'm going to switch it off. I don't need to fry it too much. And just some your Chipotle mayonnaise or anything, whatever comes in handy, whatever filling spreads you have at home. A little of this that you've made. When you spread the mayonnaise, Chipotle mayonnaise, see that you cover the edges. Don't forget the edges. Now I have not written lettuce, but I love adding lettuce, so please go ahead. Sometimes I add lettuce, sometimes some jalapeno, sometimes some olives, some pickled cabbage, whatever. Some cheese goes in. Roll it tightly and just a little bit of oil, not too much. Butter would be better actually, but just see whatever you like. Butter would taste better. And when you put it, the joint size goes in. Okay, so we are done with this also. To serve, you can have some mint mayo. Now this is done. Okay. Cut it into pieces. You could make it more golden. Take a sharp knife to cut it. You could either use these kind of forks. You can put a little dip on top if you like. Stick some olive on it if you like. Don't hide the chipotle, just put the olive on a side so that everything shows. And just you can put a toothpick if you like on this, or if you have these you could use these. लगा दो, लगाओ इसको। लगा के जाओ।
So now we are done with this also, and if you like you can just sprinkle some lettuce on the sides, on one side again, not both the sides. Just put some lettuce. Just add some, whatever you've used, you can just put that on the side. So we are done with this.